including both these concepts into one. All right, ये दोनों concepts, midpoint as well as the perpendicular line thing that we've just learned, we're going to apply that over here. So starting with the first question, it says, question number 3, 2 points have coordinates A and B. By finding the equation of the perpendicular bisector of AB or otherwise, find the coordinates of the points on the axis which are equidistant from A and B. ये आगे वाला हिस्सा करने से पहले let's quickly first find how to find the perpendicular bisector. ठीक है, there are a few steps that you need to remember. To find the equation of the perpendicular bisector, you need to follow these steps. First of all, you need to find the midpoint between the 2 points जिनका perpendicular bisector आप निकालने जा रहे हैं. You have to find the midpoint. The second thing is to find the gradient. Find the perpendicular gradient rather. ठीक है, आपको gradient निकालना भी आता है और आपको अब perpendicular gradient भी calculate करना आता है. ठीक है. The third step is to write the equation. The perpendicular bisector is a special line which passes through the midpoint. So when you find the equation of the perpendicular bisector, you're going to apply, in place of x1 and y1, you're going to apply the midpoint over there. All right, ये जो coordinate है xm, ym, you're going to apply that in your formula, y minus gradient x minus midpoint का जो ये जो coordinates हैं वो midpoint वाले coordinates डालेंगे आप इसमें to find the equation of the perpendicular bisector. Okay, so we have these 2 points here with us, the points AB. Okay, and I'm trying to find the equation of the perpendicular bisector over here. And to find the equation of the perpendicular bisector, I need to start by finding the midpoint of the points AB. Point A क्या है? Point A is 5, -2, and point B is 3, 6. So I'm going to start by finding the midpoint of AB. Midpoint of AB. And to find the midpoints, we basically use the average wala formula. Add the x coordinates, 5 plus 3 upon 2. इसी तरह y coordinates को भी add कर दीजिए, -6, -2 plus 6 upon 2. ठीक है, so that's how we calculate the midpoints. 5 plus 3 is 8, 8 upon 2 is 4. इसी तरह -2 plus 6 is 4, 4 upon 2 is 2. So that's my midpoint of AB. Can I find the gradient of AB? Let's find the gradient of AB first before finding the gradient of the perpendicular of AB. पहले हम AB का gradient निकाल लेते हैं. Gradient formula you are already aware. Subtract the y, so 6 minus -2 and 3 minus 5. That gives us 8 upon -2, which is -4 basically, right? If there's any correction, I would appreciate if you write in the chat, beta, right? So that's my gradient of AB. Perpendicular bisector का gradient जो है, क्योंकि perpendicular line है, so the gradient of the perpendicular to AB will be negative reciprocal. Negative reciprocal होने का मतलब ये है कि ये जो 4 upon 1 है उसको हम we are going to reciprocate. This is going to be written as 1 upon 4. और negative number ये already था, तो negative makes a positive. So the new gradient of the perpendicular line will be a positive 1 upon 4. I hope that is understood so far. Okay, let's work out the equation of the perpendicular bisector. Okay, so we have the gradient of the perpendicular bisector and we know कि ये perpendicular bisector midpoint से गुजरता है. ठीक है? So we are finding the equation of the perpendicular bisector. Equation of the perpendicular bisector of AB. Okay, so y minus y1 और x1 की जगह पे हम midpoint वाला coordinate insert करेंगे. Y minus 1
is equals to m times gradient of the line was 1/4 x minus x1 की जगह पे हम डालेंगे again midpoint which is 4. So simplifying this, it becomes 1/4x minus 4/4, which is 1 plus 2. And when you simplify this equation even further, this becomes 1/4x minus 4/4 is a -1. So -1 plus 2 is +1. So that's my equation for the perpendicular bisector of AB. What else are we supposed to find in this equation? All right, so we found the equation of the bisector. We have done that. Find the coordinates of the points on the axes which are equidistant from A and B. अगर A B दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, और इस लाइन को एक और लाइन जो है वो there's another line which cuts this line and it's a perpendicular bisector of the line. All right, the thing about perpendicular bisectors is that perpendicular bisector की खास बात ये है कि ना सिर्फ ये किसी भी लाइन को बीच में से बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट का मतलब ही है कि दे कट द लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बट दे आर, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इस लाइन की खास बात यह है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो ये जो दोनों पॉइंट्स है ना ए और बी, इनसे इक्वी डिस्टेंट होते हैं. इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं. So you're required to find the coordinates of the points on the axes which are equidistant from A and B. तो हमें x और y axis के वो points चाहिए जो A और B से equidistant हैं. तो मतलब हमें वो जो points होंगे वो perpendicular bisector के points होंगे, जिसका हमने अभी equation निकाला है. तो ये जो line equation हमने निकाला है अब, वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है. अब अगला काम हमें वो काम करना है, ठीक है. x एक्सिस के लिए आपको याद होगा कि y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है. तो आप इक्वेशन में अपनी y की वैल्यू 0 डाल के यू गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x, कि ये लाइन हमारी x एक्सिस को कहां कट करती है. ओके, so our equation becomes something like this, finding the LCM on both sides. So x is equals to -4. all right, तो हमारी लाइन जो है वो x एक्सिस को कहां कट करती है. हमारी लाइन x एक्सिस को कट करती है -4,0 पे, ठीक है. दिस इज वेयर द लाइन कट्स द x एक्सिस. व्हाट अबाउट द y इंटरसेप्ट, और वेयर डज द लाइन कट द y एक्सिस. ऑन द y एक्सिस यू रिमेंबर कि x की वैल्यू 0 होती है. तो x की वैल्यू जब 0 है तो y इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स 0 प्लस 1. तो y की वैल्यू automatically is +1. So the coordinate 0, 1 is where the line cuts the y-axis. All right, तो हमने दोनों points निकाल लिए. These 2 points, -4, 0 and 0, 1 are the 2 points on the axes, on the x-axis and on the y-axis, where it is equidistant from points A and B. हो सकता है आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो, बट रिमेंबर कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए यू विल यूज दीज 3 स्टेप्स. यू आर गोइंग टू फाइंड द मिड पॉइंट, यू आर गोइंग टू फाइंड द परपेंडिकुलर ग्रेडियंट, एंड देन यू विल फाइंड द लाइन इक्वेशन. ऑलराइट, सो विद दैट आई विल एंड माय क्लास टुडे, and I hope you've understood the basics about perpendicular lines and perpendicular bisectors. इसके अलावा perpendicular distance की भी बात हमने की है. एक सवाल हमने solve किया, क्वेश्चन नंबर 7. इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, बट आई वांट यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन एक्सरसाइज 7.6 राइट अवे. कौन से सवाल आपको करने हैं इन तीनों एक्सरसाइजेस में से, उसकी लिस्ट यहाँ ऊपर मौजूद है. दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई वांट यू टू अटेम्प्ट. प्लीज पे अटेंशन टू दिस हियर, ठीक है. यू विल बी सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस. अगर आप में से कोई प्लीज इसका स्क्रीनशॉट सिर्फ इतने से हिस्से का तस्वीर लेके अगर आज ग्रुप पे डाल दे, बिकॉज इसकी सबमिशन जो है इट इज बाय द एंड ऑफ दिस वीक. ऑलराइट, सो यू विल बी कंप्लीटिंग दीज few questions for homework, and while doing this it will be a good revision of whatever you have learned in maths as well as in add maths. ठीक है. इस एक्सरसाइज का असेसमेंट मैं अभी नहीं लूंगी. Once you come back, we are going to revise this, and then I'm going to take a small test once you come back from your vacation.
Alright, and I hope you enjoy your vacation, although I understand कि homework भी बहुत ज़्यादा मिला हुआ है आपको. But yes, best of luck and enjoy your time with your families. Alright, and may Allah Ta'ala bless your families with good health and long life. Okay, so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. With that, I'm going to end my meeting. Allah Hafiz.